इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा एक प्रोग्रामर को आने चाहिए। हियर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें पता रहना चाहिए व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टॉपिक है जो एक प्रोग्रामर ने अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार सीखने चाहिए, सो दैट कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते समय हमारा बेस पहले से बना रहेगा। The very first topic inside this chapter is this working of a computer. कंप्यूटर का वर्किंग जानने से पहले you should know what is computer. कंप्यूटर अभी तक आप लोग 4th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक जो कंप्यूटर का डेफिनेशन याद रखे हो वो बस इतना है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। But trust me, this is not a complete definition of a computer. Computer is an electronic machine which is capable of performing mathematical operations. Now, why we are exactly learning about computers? Because we as a programmer, we are going to develop a lot of programs and those programs are going to run inside our computer. Then that is the reason we should know in depth what is computer and how computer works. So, what is the first thing you should know about computer? Computer is the electronic machine which can perform mathematical operations. There is no other use of computer. Computer is primarily used to perform mathematical operations. Whatever the applications we use, whether you are using YouTube, whether you are using Spotify, or you are playing games on a computer, every application performs mathematical operations and those operations are carried out by computer. And so this all sums to that computer is an electronic machine which is going to perform mathematical operations.